electrostatic potential energy. Now, what is potential energy? Whenever work is done against a force, it is stored in the system in the form of potential energy. So, we define electrostatic potential energy as the work done in moving a charge from infinity to a point in the field against the electric force. Okay, that this work done is measure of potential energy. We know that potential is work done per unit charge. Hence, work done can be written as Q into V. Okay, now let us take a system of two charges. Okay, let us take represented diagrammatically. We choose a coordinate plane. You have a charge Q1 located at position vector R1, a charge Q2 located at position vector R2. Now AB, it can be written as R2 minus R1. If you apply law of triangular vectors, you can write AB as R2 minus R1. First, we will find out potential at the point B. Okay, potential at the point B due to the charge Q1. It can be written as K Q1 upon AB, and AB is what? It is R2 minus R1. Okay, AB is R2 minus R1. We have to take magnitude of this vector. Okay, now what will be work done? It will be Q into V. So we can write work done, which is the measure of potential energy. It will become Q2 into V. So potential is due to Q1. Q2 placed at that point, and hence work done becomes Q2 into V. When we substitute the value of V, the result becomes potential energy, or you can say work done, is K Q1 Q2 upon R2 minus R1, magnitude of the vector R2 minus R1. We can write it in a yet simpler form. U is equals to, work done is potential energy. So U is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. Okay, this is the constant K. Q1, Q2, we can write R12. Simple. Two charges, Q1, Q2, and R12 represents the distance between the two charges. So this represents potential energy due to system of two charges. Okay. Now let us take potential energy of a system of three charges. If you have more than two, let us consider three charges. We imagine again a coordinate plane. Now we will be considering three charges Q1, Q2 and Q3. Let the position vectors be R1, R2 and R3. Now AB is distance between 1 and 2. Okay, BC is distance between 2 and 3, and AC represents distance between Q1 and Q3. So what we can be represent them? We can write it as R12. Okay, AB is R12, BC is R23 and AC is R13. Okay, so we have already seen the formula for potential energy. Now the same formula we will use directly. First of all, if you take only Q1 and Q2, you have already seen that potential energy is K Q1 Q2 upon R12. We have just written it. Okay. Now we want to find out, we want to place a third charge C. So this third charge will be repelled by Q1 as well as Q2. So to place the third charge at C, work is to be done against Q1 as well as against Q2. So how will we write this? Now let us take of third charge in presence of first and second. So you have to do work against second charge and also against first charge. So you can write it as U123 as U23 plus U13. Okay, what will be further expression? You can write it as K Q2 Q3 upon R23 plus K Q1 Q3 upon R13. Okay, so first what we have done, we have found out first for system of two charges U12. Now if you take the third charge, this third charge will be repelled by the charge at A. So you have to do work against the charge located at A, that is Q1. Then you have to do work against the charge located at B, that is
Q2. So there will be two terms now, and those two terms are K Q2 Q3 upon R23. वर्क डन अगेंस्ट 2 आ गया, और अगर वर्क डन अगेंस्ट 1 निकालना है तो क्या आ जाएगा, K Q1 Q3 upon R13. ओके, नाउ एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो टोटल वर्क डन निकालना है तो आप सबको ऐड कर देंगे, और सबको ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा. यू कैन राइट टोटल एनर्जी एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन. के आपने कॉमन ले लिया. फर्स्ट टर्म क्या है, Q1 Q2 upon R12. देन यू हैव टू मोर टर्म्स, Q1 Q3 upon R13 and Q2 Q3 upon R23. Okay, so this represents the potential energy of system of 3 charges. Okay, now suppose you take fourth charge. If you take fourth charge Q4 to be placed somewhere, then work has to be done against first, against second and also against third. That means 3 more terms will be added up. तो total number of terms कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी तब. तो ऐसे ही यदि आपके पास n चार्जेस हैं तो नंबर इंक्रीज होता जाएगा. और आप देखेंगे यहाँ पे 2 वेरिएबल्स चल रहे हैं, कुछ भी फिक्स नहीं है. पहले में Q1 Q2 अपॉन R12 है, फिर Q1 Q3 अपॉन R13 है, Q2 Q3 अपॉन R23. नथिंग इज फिक्स्ड, बोथ द numbers are changing. Okay, so if you want to write the potential energy for system of n charges, we will make use of sigma notation. Okay, and let us see what the sigma notation is. First to start from, देखिए Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3, इसलिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, हमने 2 वेरिएबल ले लिए QI QJ. ओके, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ऊपर QI QJ है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा RIJ. ओके, दिस इज वन टर्म. नाउ समेशन ऑफ, you are taking I will move from 1 to n and J is also from 1 to n. Another important thing, I is never equals to J. देखिए यहाँ पे दोनों नंबर डिफरेंट है, 1 2 1 3 2 3 3 4 4 3 एक्सेट्रा. ओके, सो J and I कैन नॉट बी इक्वल, सो I is not equals to J. and the significance of this factor half है ना. हमने यहाँ पे जब I is equals to 1 से J is equals to 1 लिया है, तो ऐसा हो सकता है कि हमने I को 1 लिया और J को 2 लिया. फिर ये भी हो सकता है कि I को 2 किया और J को 1 किया, तो 2 बार टर्म्स आ जाएंगे, Q1 Q2 Q2 Q1. तो ये जो डबल टर्म्स आ रही हैं ये समेशन में, इस डबल को एलिमिनेट करने के लिए हमने यहाँ पे फैक्टर हाफ ले लिया. तो टोटल एनर्जी क्या होगी, हाफ K sigma I is equals to 1 to n, sigma J is equals to 1 to n, I is not equals to J, QI QJ upon RIJ. Okay, so this represents the potential energy due to system of n charges. This is just a representation. Basically what you want to do, how you want to find out the potential energy. अगर 2 चार्जेस हैं तो आप इजीली निकाल सकते हैं K Q1 Q2 upon R12. अगर 3 चार्जेस हैं तो पहले कैसे स्टार्ट किया, पहले आपने 2 का निकाला, फिर थर्ड चार्ज को अगेंस्ट फर्स्ट और अगेंस्ट सेकेंड दोनों वर्क डन निकाले. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेंगे अभी हम, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं. हैव यू फॉलोड? सो जस्ट जनरल फॉर्मूला इज K Q1 Q2 अपॉन R12. ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, अगर 3 चार्जेस हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगी, अगर 4 चार्जेस हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स 6 हो जाएंगी, एंड सो ऑन इट विल इंक्रीज. Okay, but usually you are given either a system of 2, 3 or 4. At the most, maximum will be 4. N charges is just the representation. Okay, we take an example. 4 charges are arranged at the corners of a square ABCD of side A as shown in the figure. Find the work required to put together this arrangement. And secondly, a charge Q0 is to be brought at the center of the square, the 4 charges being held fixed at its corners. How much extra work is needed to be done to do this? Okay, so we take a system of 4 charges A, B, C, D. Charge arrangement is given, side of the square is A. The first thing is find the work required to put together this arrangement. Okay, work to form this arrangement is nothing but potential energy.
ठीक है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी ही निकालनी है। कैसे निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी? अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, देखिए तो क्या होगा, आप कहाँ से शुरू करेंगे, ए से। तो फर्स्ट यू स्टार्ट फ्रॉम ए, सो इट विल बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बी, तो यू ए बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए एंड सी, यू ए सी, देन ऑफ थर्ड दैट इज यू ए डी, ठीक है। देन यू स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड चार्ज, है ना। वापस आपको बी से ए की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि वो टर्म तो आप ए बी ऑलरेडी ले चुके हैं। तो यू स्टार्ट फ्रॉम बी नाउ, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी सी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी डी एंड potential energy finally will be of CD. Is it clear? You will start from A, AB, AC and AD. 3 terms. Then you start from B. So आपको आगे ही जाना है, पीछे नहीं जाना है। आप सिस्टमैटिकली लिखेंगे तो आपके पूरे टर्म्स इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, यू स्टार्ट फ्रॉम B, सो पोटेंशियल एनर्जी BC, then potential energy of B and D, and third last you left is C. So UCD. So total potential energy will be UAB plus UAC, UAD plus UBC plus UBD and UCD. Potential energy का फॉर्मूला पता है आपको, K Q1 Q2 upon R. Let us substitute. UAB, A पर चार्ज प्लस Q है, B पे माइनस Q है, तो क्या आ जाएगा K माइनस Q स्क्वायर बाय A, क्योंकि साइड ऑफ द स्क्वायर A है। फिर जब हम ए सी लेंगे तो एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू, फिर से नेगेटिव आ जाएगा क्यू स्क्वेयर, पर डिनोमिनेटर में अब क्या आ जाएगा, अब ये ए सी जो डिस्टेंस है ये डायगोनल ऑफ द स्क्वायर है, ये √2a हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन राइट दी अदर एक्सप्रेशंस। ओके, अब हमने क्या किया, इसमें से के क्यू स्क्वायर अपॉन ए कॉमन ले लिया, और बाकी टर्म्स जो ब्रैकेट में बची उसमें देखिए -1, अगेन यू हैव टू +1 -1, तो पूरे वंस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और -1 अपॉन √2 और -1 अपॉन √2 दीज टर्म्स विल एड अप। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन ए तो पहले ही था, इंटू 2 अपॉन √2 विद अ नेगेटिव साइन। ओके, and 2 by √2 can be written as √2, so the energy becomes minus k √2 q square upon a. Clear? So this becomes the potential energy of this arrangement. It's very simple to find out because there is no direction. आपको resultant लेना बहुत easy है, खाली terms को solve करते वक्त sign of the charge जरूर आपको ध्यान में लेना है, ठीक है। अब second part, आपको चार्ज Q0 को यदि सेंटर पे प्लेस करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो पहले सेंटर पे पोटेंशियल निकालें, जब भी वर्क डन निकालना है तो पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो पोटेंशियल ए बी सी डी सभी चार्जेस से लिखेंगे, और आप देखेंगे टोटल पोटेंशियल 0 हो जाता है। ये R हमने यहाँ क्या लिया है, R इज़ द डिस्टेंस ऑफ ईच चार्ज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज अरेंजमेंट। ओके, सो व्हाट हैपन्स हियर, distances are equal of all the charges. There are 2 positive and 2 negative charges, potential becomes 0. If potential is 0, then work done is also 0, because work done is Q0 into V. Okay? तो इस अरेंजमेंट को बनाने के लिए जो ए बी सी डी दिया है उसका वर्क डन भी हमने कैलकुलेट कर लिया, इस सिस्टम की एनर्जी भी निकाल ली। और यदि अब बाहर से कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको सेंटर पे ला के रखना है तो उसके लिए वर्क डन 0 होगा, क्योंकि सेंटर पे पोटेंशियल 0 है। Okay, so this is just an application of what you have studied. Okay.